Hi guys, hope you're doing well. हम हैं मेघना और राहुल and welcome to Milestones. आज का टेम्परेचर है -15 डिग्री सेल्सियस. It is so freaking cold. And हमारे आज के ट्रिप में हम कवर करेंगे डाउनटाउन मैनहट्टन फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के कुछ अमेजिंग टूरिस्ट अट्रैक्शंस. डाउनटाउन मैनहट्टन में जितने भी वॉकिंग टूर्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उन सभी गाइडेड टूर्स में ये सारे स्पॉट्स ज़रूर कवर होते हैं. That's right. इसलिए हम आपके आज के टूरिस्ट गाइड्स आपको ये सारे स्पॉट्स दिखाएंगे. And honestly, जितनी ठंड आज यहाँ पे है, you will be glad to visit all these places virtually. Yeah, and windy. Yeah, so windy. So आज की शुरुआत हम करेंगे बैटरी पार्क से, which is the southernmost point of Manhattan Island. और वहाँ से हम जाएंगे फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट पे, and we'll see the Charging Bull, New York Stock Exchange, Wall Street, Trinity Church, and Stone Street. Yeah, and I'm so excited to show you guys around. I have been working in financial district for the last few years, and it is such a massive part of why I love the city. यहाँ की just general vibe, यहाँ के contrasting architecture styles, यहाँ की fast-paced lifestyle just makes me feel overwhelmed and impressed like all the time. I'm sure you guys feel the same way जब हम आपको like लेके चलेंगे अपने साथ. But I just love New York City, and I am just amazed by how amazingly beautiful downtown Manhattan is, you know. Okay, clearly Rahul feels very strongly about downtown Manhattan. So, without further ado, let's get going. All right, cool. Let's go. Oh, and before we go, don't forget to like this video and share it with your friends and family. Comment section में हमें बताएं if there's a specific location in New York City that you want us to visit, and please show us your love and support by subscribing to this channel. All right, let's go. Right now we're at the East Coast Memorial, जो कि एक World War II memorial है. It comprises of a gigantic eagle statue and 8 granite slabs, जहाँ पर वॉर में शहीद हुए अमेरिकन सर्विसमैन के नाम लिखे गए हैं. In fact, यहाँ 20 से भी ज़्यादा मॉन्यूमेंट्स हैं, जिनमें से कुछ हम आज देखेंगे. So this is Castle Clinton. This used to be an old fort which was an American immigration station. But right now, as you guys can probably see, it is just a departure station for ferries to Ellis Island and Statue of Liberty.
So we're here. This is the Charging Bull, which is a bronze sculpture on Broadway that's also called Wall Street Bull. And it weighs a whopping 3,200 kgs. It is 11 feet tall and 16 feet long. Isn't it beautiful? In case you're wondering कि ये बुल इतना गुस्से में क्यों है? That's because the aggressive stance represents financial optimism and prosperity. फन फैक्ट, डाउनटाउन मैनहट्टन के टूर गाइड्स काफ़ी टाइम से टूरिस्ट्स को रेकमेंड करते आ रहे हैं दैट चार्जिंग बुल के नोज, हॉर्न्स और टेस्टिकल्स को रब करने से गुड लक मिलता है। ये ट्रेडिशन अब इतना पॉपुलर हो गया कि इफ़ यू नोटिस तो ये तीनों एरियाज अपीयर मोर पॉलिश्ड दैन द रेस्ट ऑफ द बुल्स बॉडी बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंट रबिंग। नो पन इंटेंडेड। Trinity Church is a beautiful and historic high church located at the intersection of Wall Street and Broadway. ये भी एक national historical landmark है. Look at its beautiful Gothic architecture. और a little history bite. ये building इस church की तीसरी building है. सबसे पहली building was built way back in 1639, लेकिन it was destroyed in the Great NYSE fire of 1776. इस चर्च की सेकेंड बिल्डिंग वॉज बिल्ट इन द लेट 1700s, लेकिन वो भी 1830s में गिरानी पड़ी बिकॉज इट वॉज सिवियरली वीकेंड बाय द स्नोज। और फाइनली ये बिल्डिंग दैट यू सी राइट हियर वॉज बिल्ट इन 1846। मैं 2016 में न्यूयॉर्क सिटी आया था फॉर एन इंटरव्यू। I was staying at a hotel nearby and I remember strolling around the Trinity Church building at night. I think it was a full moon night and the building just looked so beautiful in that moonlight. It's just one of those memories that stick by you. So अब हम जा रहे हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज which is the world's largest stock exchange and is also a national historic landmark. ये वॉल स्ट्रीट पे लोकेटेड है and as we get closer I think यहाँ पे आज कुछ protests हो रहे हैं, probably because they've been in the news recently. The trading day starts at 9:30 a.m. Eastern Time by formally ringing an opening bell and ends at 4 p.m. Eastern Time by ringing the closing bell. Occasionally यहाँ पे कुछ prominent personalities को भी invite किया जाता है to ring the opening and the closing bells for the trading day. So ये है Fearless Girl, a tiny but mighty statue जो कि workplace gender diversity का मैसेज प्रमोट करने के लिए लगाई गई है। इसकी ओरिजिनल लोकेशन थी चार्जिंग बुल के सामने, बट 2019 ऑनवर्ड्स इसको न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के सामने रिलोकेट कर दिया गया है। And here you can see New York की Fearless Girl with my very own Fearless Girl. फाइनली हम आए हैं स्टोन स्ट्रीट, जहाँ पे होगा आज का डिनर एंड द एंड ऑफ टुडेज ट्रिप। सी यू नेक्स्ट टाइम।